यार द इंग्लिश लैंग्वेज ट्रीट्स मिस्टेक्स वेरी यूनिकली, राइट? लाइक अगर आप गलती करते हो, यू हैव टू से आई हैव मेड अ मिस्टेक. आपको भी लगता है साला मैंने बनाया कुछ, ये मेरा है, राइट? तो पकड़ लेते हैं इसका मिस्टेक है, जो यू नो, राइट? बट हिंदी में ऐसे कैसे किसी को ब्लेम करते हैं? हिंदी में नहीं करते ऐसे. हिंदी में गलती बनाई नहीं जाती, गलती हो जाती है, राइट? गलती थी तो हो गई, गलती से गलती हो गई, राइट? राइट. बट द अदर थिंग दैट आई सी इज लव इन इंग्लिश. यू ऑल्सो, वी हैव टू मेक लव, राइट? राइट. बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लव, देन यू हैव टू मेक लव. ये फाइंडिंग मेकिंग में वेस्टर्न पॉपुलेशन उतनी निकली नहीं है. बट हिंदी में प्यार को बनाया नहीं जाता, हिंदी में प्यार हो जाता है. सोल प्रिंसिपल ऑफ अरेंज्ड मैरिज. आबादी बिलियन हो गई है क्योंकि प्यार हो जाएगा कभी ना कभी बीच में, राइट? एंड आई थिंक इस मिस्टेक और लव का एक कोरिलेशन है हिंदी में. लाइक आई थिंक दोनों मीन द सेम थिंग. हैव यू सीन इन दीज ओल्ड मूवीज इफ समबडी गेट्स प्रेग्नेंट हाउ दे यूज्ड टू टेल देयर पेरेंट्स, बाबूजी मुझसे गलती हो गई. दिस इज द गलती शी इज टॉकिंग अबाउट. इट इज प्यार. तो प्यार एंड गलती में बहुत सिनोनिमस है. Yes, Varshu. Hi, has it started yet? अब क्या करें यार, हो गया. No, not yet. Did you shave or you went like a beggar? Means shaved or not shaved? Shaved. I know you haven't shaved. Anyways, please don't mess things up as usual. Otherwise, खत्म कर दूंगी. I'll shave. मेडिकल में बहुत कंपटीशन रहता है, शादी जल्दी करनी होती है. एक बार मैं ओपीडी में बैठा था और एक पेशेंट देख रहा था और मेरी बाएं आंख फड़कने लगी. मुझे लगा आज कुछ तो लोचा होने वाला है. ओके, से आ से ई. ओके, प्लीज सिट. Everything seems to look the same. There's been no improvement at all. No improvement at all, doctor. In fact, I think my throat pain, it's gone from bad to worse. Can you show me your prescription? What did I prescribe you last time? So these antibiotics got over 2 days back. So let me give you something stronger, okay? So those antibiotics tasted really horrible, doctor. So I took them on the first day, but then I completely stopped. You didn't finish the course. No, I didn't. डॉक्टर साहब, मैं पेशेंट अभी देखते क्या? यार मैं अभी दूसरे पेशेंट के साथ हूँ, इनका मैं इलाज कर रहा हूँ. थोड़ी देर प्लीज बाहर वेट कीजिए. ये देखने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है? प्लीज. ठीक है साहब, ठीक है. About these painkillers? Yeah. Coming to those painkillers, doctor. So I googled those medicines. Did you know they cause kidney failure? I mean, my uncle, he had similar medicines and his kidneys failed. I mean, how can you think I'll take something so dangerous? No way. I'm not using those medicines for sure. So you didn't take the painkillers also? I did not. Okay. हो गया साहब. अरे यार, जरा मुझे जल्दी देख डालियो साहब. अरे मैं अभी इनका इलाज कर रहा हूँ ना यार. जब इनको खत्म करूंगा तो बुलाऊंगा मैं आपको ना. खत्म करने के बाद बुलाऊंगा. प्लीज आप बाहर वेट कीजिए 2 मिनट प्लीज. ठीक सर, मैं बाहर ही करकू हूँ साहब. Most of your problems because of the allergy. Did you at least use the spray? Yeah, the spray I used properly, doctor. Like really properly on both sides, huh? So there's no improvement at all, but the full bottle's over. सर,
अरे यार मैं पेशेंट देख रहा हूँ यार, खत्म करके बुलाऊंगा ना, बोला ना मैंने। प्लीज बाहर जाओ, वेट करो। यू लिसन, ये दवाई लेने से ठीक होते हैं, समझे? लेना पड़ता है, जैसे बताया है लेना, यहाँ लिखा है कि सुबह रात को खाने के बाद लेना है, 5 डेज लेना है। यू कैन डू योर मेडिसिन द वे यू वांट टू, ठीक है? इसको इस तरह से लोगे तभी तो ठीक होगे। क्यों ऐसे ऐसे स्प्रे करके नाक का एलर्जी कैसा जाएगा? Excuse me, doctor. So first you prescribe bad tasting medicines. That too the ones that are so dangerous. And then you talk to me like this? I mean, please check your Zomato review tomorrow. You will be in for a surprise for sure. सो पेशेंट खत्म करने के बाद मैं देखा यार ये आदमी आ नहीं रहा, कहाँ चला गया? और सडनली मेरे को कॉल आया मेडिकल सुपरिटेंडेंट का। वो बोल रहा है यार तुम्हारे रूम में से एक पेशेंट भागता हुआ गया है, डरता हुआ टेबल पर चढ़ गया है, साइड में बैठ के चिल्ला रहा है। बोल रहा है वो मोटा जल्लादा एक एक को खत्म कर करके बुला रहा है। You wanted to see me, ma'am? Yes, come in, Jagdish. Have a seat. I'm your thesis guide, and here is your topic. Thank you. So, from tomorrow, once a week, you'll go to that rural outreach program and examine patients with suspected throat cancer. Let's look at the correlation between early cancer changes and nutritional status. Yeah? Yes, ma'am. Yes? I'll be right there. Dr. Joseph, Yes, ma'am. guide Jagdish about the correlation study we were discussing, yeah? Yes, ma'am. Welcome to the torture. Torture, sir? She was my thesis guide. 89 drafts of my thesis before she approved finally. 89? And from 89 drafts, Kavita had finally approved my first draft as it is. How can I forget her 2 years of pure torture hell? Yes, sir, it's a torture indeed. Sir, can you request her to send me for this from next week onwards, sir? Why? Sir, actually, I have night duty tonight, and tomorrow I have a rehearsal for a play, and the performance is this weekend, sir. So cute! You have no idea what you have gotten into. A pure torture hell. Enjoy your night duty. यार ये सीनियर डॉक्टर्स को हमें डराने में क्या मजा आता है यार, ऊपर से नाइट ड्यूटी भी है। तरस नहीं आता उन्हें? नाइट ड्यूटी का सबसे टायरिंग काम होता है बार बार जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, कपड़े बदलो उतारो, कपड़े बदलो उतारो, कपड़े बदलो उतारो, कपड़े बदलो उतारो। और कभी कभी एक बार केस के लिए घुस गए ना तो पूरी रात केस ही चलता रहता हमारा। Jagdish, this patient has extensive nasal polyposis. Can you tell me why have you got a chest X-ray done? फिर सर्जरी खत्म करने के बाद नोट्स डालो। फिर अधमरी स्थिति में बिना नींद के सुबह जब जाओ तो सीनियर रेसिडेंट खड़ी होती है बंठन के ज्ञान टेस्ट करने। और बताओ बेटा। Okay. What is Samtus tried? Post this case in the morning at 8 am and please make sure that the microdebrider is available. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Guys, and the next time I see you, I want you to know the answers. So please read up and come. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
सेम्टर लाल वाली बुक थी ना, उसमें था वो कुछ। किताब नहीं लग रहा यार, कान में कुछ रहेगा, कुछ तो लग गई बट। सिस्टर जी केस पोस्ट करो 8 बजे। व्हाट इज दिस रीड अप एंड कम? वेयर डिड आई गो टू रीड अप एंड कम? तो अस्पताल में बैठा हूं मैं 2 दिन से। एक बार ऑपरेशन थिएटर में अगर घुस गए ना तो वहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अगर किसी तरह से बच बचा के निकल भी गए तो कभी कभी ऐसा लगता है लोग तुमको बुला रहे हैं, और बुला रही है, और बुला रही होती है तुम्हारी नींद। आ जाओ। यार ये 36 आवर्स वाली ड्यूटी यार बहुत टायरिंग रहता है यार। मेरा ड्यूटी किया ना, पता चला। अरे मेरी किस्मत में तो नाइट ड्यूटीज ही लिखी है यार। तेरी तो फिर भी चिल होती है नाइट ड्यूटीज, मेरी तो बहुत एक्टिव होता है। मैं शायद 2 घंटे ही सोया होऊंगा। पोस्ट ड्यूटी ऑफ देना चाहिए यार। कल मेरा कॉस्ट्यूम रिहर्सल भी है। अरे तू सुन ना, लेट्स टेक ए ब्रेक, नोट्स डाल दे उधर, एक मूवी चलते हैं। कौन सी लगी? अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, कम से कम इस झंझट से तो मुक्ति मिलेगी ना। चल चल यार, आई नीड दिस। हाँ चलो। अच्छा, मूवी के लिए हाँ तो कर दी थी मैंने, लेकिन उसके बाद मुझे याद आया दैट आई एम मैरिड। अब 72 आवर्स नाइट ड्यूटी के बाद इफ यू ऐड 3 आवर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उसका परमिशन नहीं मिलता। 3 आवर्स ऑफ सफरिंग चलेगा। So I did something that most husbands do. I called my wife and said, "Look, एक और नया केस आया है. It'll take exactly 2.5-3 hours for me to manage this case. वो मैं केस देख के आ जाऊंगा." And she's also a doctor. She's like, "अच्छा, that's more important. You do, no problem, no problem." Right? And I went to watch a movie. How many of you like watching a movie in a mall? Give me a cheer. I like eating popcorn and iced tea, right? When I'm in a mall. So I'm standing in the queue like a good Indian citizen की popcorn iced tea के लिए line में लगूंगा. You always find this one guy who will come like this. Sir, one popcorn, one iced tea kodi. I'm like, हम लोग लाइन में लगे इधर। ओह लाइन, ओह लाइन, ओह कैंडल लाइन। And then there are people from Delhi. ये अमूल माचो पहन के आते हैं और ये खड़े होते हैं इस एटीट्यूड के साथ, इस स्वैग के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, that people from this line start standing behind them. सोचते ये सही होगा, इसका कॉन्फिडेंस देख रहे हो, और मुझे बोल रहे हैं अबे एड़े लाइन। आई एम लाइक, ओ लाइन, ओ लाइन। नहीं, आई डिडंट डू दैट। व्हाई शुड आई डू दैट? आई वाज वेयरिंग रूपा फ्रंटलाइन एंड पीपल विद रूपा फ्रंटलाइन फाइट विद अमूल माचो, और हम लोग झगड़ रहे हैं, और वो थिएटर के अंदर से लोग आ रहे हैं, ये नागा था पहले, ये क्या होगा रे इधर, और मैं झगड़ रहा हूं। उसमें somebody recognizes me from the side view of my Facebook profile and messages my wife. Your husband is in the movie theater watching movie and not letting anybody else also watch movie. और मेरी वाइफ की साइकेट्री पोस्टिंग थी, तो वो माइंड गेम्स खेलने लगे। बोले डायग्नोसिस पता केस का? मैं बोला केस का डायग्नोसिस कुछ हेड इंजरी, कुछ केचप वेचप डाला। एंड व्हेन आई गो होम, शी opens the door and she looks at me and she's like, Where were you? guys, if your wife, sister, daughter, mother ever ask you where were you, just tell them where you were. Because they already knew where you were. It is just evidence collection process चल रहा है। सजा already सुनाई जा चुकी है। So you should answer that carefully. And I was like, I was at the duty, I told you. Are you sure? I'm like, now she knows something. But what if she knows something else and I tell her this and get caught for 2 things? तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना? बोला नहीं मैं तो ड्यूटी पे था। Are you telling? Shall I tell? You tell. She's like, how was the movie?
50 Shades of Pale. मैं तेरे को कैसे पता चला? So बोला किसी ने मैसेज किया. मैं बोला अभी उसका नाम बता, मैं मार के आता हूँ उसको. You know, get my Amul macho and fight. But she's like, no, that is not the point. I'm like, then what is the point? She's like, you lied to me. I'm like, oh. It's like, you could be having an affair, you could be cheating on me. I'm like, no, I was with my friend watching a movie. Rest of the argument, I'm trying to convince her कि मैं picture देखने गया था दोस्त के साथ. You know, that's how it is. And we went to a, very bad argument, marriage on rocks, almost about to split. And then she says something very confusing. Just do whatever you want. I'm like, madam, one doubt. Isn't the reason for this fight because I was doing whatever I wanted? Now you want me to do whatever I want again? मैं बड़ा confused हो गया. But I didn't want to, really take panga. So I wanted to try out stand-up comedy. So I went to an open mic and I tried out stand-up comedy. This is where you clap. But I was not very good at stand-up comedy. Only time I would get claps is when I would request it like this. Only time I would get a standing ovation is when I would refuse to leave. अपने आप ही खड़े हो जाते थे लोग निकलने के लिए. But I realized my mistake. I went to my wife. I said, I'm sorry, Janeman. मेरे से गलती हो गई है. Next time I'll take you and go for the movie. I won't do this again. And that time she said something that changed my entire life. It's not what you said. It's the way you said it. Alright. Hey guys, that is the secret sauce of stand-up comedy. It's not what you say. It is the way you say. Like अभी आप लोग हंस रहे हो स्टोरी पे, राइट? कल को कोई पूछेगा क्या किया? हाँ, हमने कॉमेडी देखी. Tell me a joke. Ah, that doctor lies to his wife, gets cut. This is the expression you will get. Comedy, yeah? Go watch some real jokes on YouTube. Because it's not what I'm saying. It is the way I'm saying it. And as I started smiling with that realization, she was crying. That doesn't go well. And that time she unleashed the 7-word question no man on this planet can answer. ये क्वेश्चन आता ही आपके पास 2 से 3 महीने हैं दूसरा पार्टनर ढूंढने का. क्योंकि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. You know what the question is? How could you do this to me? Try answering that. एक दिन I told her how I could do this to her. बहुत बुरा हाल हुआ था मेरा. Sometimes I pretend I didn't hear. You don't even know what you did. Sometimes I start smiling. Life is a joke है. कैसे आंसर करो इसको यार? And I am a doctor, so I'm like, अच्छा कोई अगर सवाल पूछा तो जवाब उसको पता होगा, right? So I thought maybe she knows the answer to this question. So I wanted to know the answer from her. अगली शादी में काम आएगा, right? So I waited for her to make a mistake so I can ask this question to her. 2 साल बाद, she made a mistake. And I was like, Janeman, इधर आ. I want to know something. I like, this has affected me a lot. How could you do this to me? She looks at me from top to down. She's like, after all that I put up with you, how could you say this to me? How could you say this to me? यार बहुत दिनों के बाद मुझे पता लगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था आफ्टर द वाइवा. Dr. Manjunath, do you want to pass this exam? Yes, sir. Then make Dr. Chaturvedi's life miserable. Sir? That is the only way. You are in that need because of that friend's need.